Today we are going to discuss our topic drift velocity. Students, as we know, inside a conductor there are lots of free electrons. What are conductors? Conductors are those which conduct electricity, and we know very well that conductor can conduct electricity only when they possess the free electrons. Students, we know that electrons conduct electricity because there is the presence of the free electrons, and these free electrons in a conductor are under random motions. So as we know that inside a conductor there are lots of free electrons. These free electrons are in random motion. Due to their random motion, the free electron keep on suffering collision with the positive ion in the conductor. So frequently net flow of electron in any party production is zero. क्योंकि बेटा हमें पता है कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे स्टार्ट मूविंग रैंडमली, जैसे आपको दिख रहा है these are the random motion of the electrons, and whenever they move randomly they keep on suffering collision with the positive ion. वो पॉजिटिव आयन के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक पार्टी प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट फ्लो है वो क्या है, जीरो है. So due to the random motion, the free electron keep on suffering collision with the positive ion in a conductor. So frequently net flow of electron in any party production is zero. In other words, we can say that average thermal velocity of electron is zero. Average thermal velocity of electron is zero. So if U1, U2, U3, Un are the random thermal velocities of an electrons in a conductor, then their average thermal velocity is U1 plus U2 plus U3 so on UN upon N is equal to 0. तो इक्वेशन 1 हमें क्या बता रही है? इक्वेशन 1 हमें ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है. क्यों जीरो है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्टर के अंदर कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और जब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है. क्लियर? ओके. एंड जब इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव करते हैं तो किस टाइप का पाथ बनाते हैं, इस टाइप का पाथ बना रहे हैं. ठीक है, जिगजैग पाथ बना रहे हैं. ओके. तो इसके बाद देखिए, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ सपोज दैट वी हैव ए कंडक्टर. ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है. दिस इज ए कंडक्टर. This is the potential difference. And is the length of conductor. Current flow from the positive terminal to negative terminal. This is function of current I. और यहाँ से electrons this is electron. This is positive end of the vector. This is the negative end of the vector. Clear? Okay. So let us suppose that we have a conductor having length L, area cross section A, and B is the potential difference applied across the ends of conductor. तो बेटा यहाँ से if B आपके पास क्या है, B is the potential difference applied across the ends of conductor, और अब आपके पास क्या है, V आपके पास क्या है, यहाँ से potential difference applied across ends of conductor. L आपके पास क्या है, यहाँ से length of the conductor.
field setup is given as इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इज गिवन एज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास E is equal to V by L, दिस इक्वेशन नंबर 2। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेटअप होगी वो आपके पास क्या है E is equal to V by L। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी, द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of this electric field is from क्या डायरेक्शन इसकी, डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर टू नेगेटिव एंड, फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर to negative end. Under the influence of the electric field, under the influence of this electric field, under the influence of this electric field, force experienced by electron in conductor, under the influence of this electric field, force experienced by electron in conductor, क्या ये बेटा फोर्स यहां से F is equal to minus E into E। ये फार्मूला आपका कौन से फार्मूले से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है माइनस ई, तो F की वैल्यू आपके पास आ गई F इज इक्वल टू माइनस E इनटू E। दिस इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? So if A is the acceleration produced under the influence of this force as the free electron accelerated so by Newton's second law of motions, so by Newton's second law of motion, if A is the acceleration acquired by electrons, then F is equal to m into A. This equation number 4. Comparing 3 and 4. Comparing 3 and 4, 3 और 4 को आपने कंपेयर कर दिया, क्या बन जाएगा आपके पास यहां से, आपके पास क्या है यहां से m A is equal to minus E into E। This implies A की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी minus EE by m। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आपके पास आ गई minus EE by m। This equation number 4। The direction of this acceleration is opposite to the direction of electric field, and from equation 4 we see that acceleration is opposite to the direction of electric field। नेगेटिव साइन लगा बेटा बीच में, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में एक्सेलरेट करेंगे। डायग्राम का आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, मीन जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या है अपोजिट है यहां से। ठीक है, सो इसमें देखिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द influence of
the free electrons accelerates and acquires a under the influence of this electric field, free electron accelerates and acquire a velocity component. In addition to thermal velocity. Under the influence of this electric field, free electron accelerate and acquire a velocity component in addition to thermal velocity. तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? V1 is equal to U1 plus A tau 1. देखो, under the influence of this electric field, free electron accelerate and acquire a velocity component in addition to thermal velocity. ये आपके पास thermal velocity थी और ये वाली एक्सेलरेशन है और ये tau 1 आपके पास क्या है? ये टाइम है, ठीक है कि नहीं? और ये आपके पास नेट वेलोसिटी होगी v1 is equal to u1 plus a tau 1. अब देखो बेटा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से करेगा, ये मूव करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी ये शॉर्ट टाइम के लिए होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, यहां से मूव करेगा और जैसे ही यहां से मूव करेगा इट कोलाइड विद द पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये थोड़ी सी मूवमेंट करेगा और कंडक्टर्स के अंदर जो पॉजिटिव आयन होंगे उनके साथ क्या हो जाएगा, ये कोलाइड कर जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो शॉर्ट टाइम यहां से लिखिए आप इसके लिए the short time for which free electron accelerates, the short time for which free electron accelerates inside a matter before it undergoes collision with positive ion. The short time for which free electron accelerate inside a matter before it undergoes collision with positive ion is called relaxation time. Is known as the relaxation time. The short time for which free electron accelerate inside a matter before it undergoes collision with positive ion is called the relaxation time. Clear? तो अभी हमने क्या कहा कि under the influence of this electric field, the free electron accelerate and acquire a velocity component in addition to thermal velocity. तो देखो बेटा, ये क्या था, ये जो इसकी थर्मल वेलोसिटी थी, a इसकी एक्सेलरेशन थी, tau 1 इसका क्या है, टाइम है. तो ये जो आपके पास नेट वेलोसिटी यहां से आएगी वो क्या बनेगी, v1, ठीक है. सिमिलरली v2 क्या हो जाएगा बेटा, ये u2 प्लस a tau 2, इस डायरेक्शन में टाइम. ऐसे ही बेटा आपके पास यहां से u1 plus a tau 1, v2 is equal to u2 a tau 2, v3 is equal to u3 plus a tau 3. ऐसे हम इसके लिए vn is equal to un plus a tau 1. So drift velocity is given as, drift velocity कैसे जाएगी आपकी बेटा, drift velocity यहां से vt
BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और so on Vn upon n. This is our drift velocity. Clear? Okay, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी. Drift velocity is the average velocity with which a free electron in a conductor just gets drifted under the influence of the electric field across the conductor. Clear? Drift velocity is the velocity with which a free electron inside a conductor just gets drifted under the influence of electric field across the conductor. So drift velocity is the velocity. So drift velocity is the velocity with which free electrons. Drift velocity is the velocity with which free electrons just gets drifted under the influence of electric field applied electric field across the conductor. So drift velocity is the velocity with which a free electron just gets drifted under the influence of applied electric field across the conductor. So बेटा यहाँ पे ये वैल्यू रखी है V1 plus V2 plus V3 plus so on Vn upon n. अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये है V1 plus V2 plus V3 so on Vn by n. तो ये क्या है? एवरेज है. तो यहाँ जो लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी. Drift velocity is the average velocity with which free electron just gets drifted under the influence of applied electric field across the conductor. ठीक है? तो वैल्यू पुट करें यहाँ से, चेंज हो जाएगा आपके पास. So what is the drift velocity? Drift velocity is the average velocity with which free electron just gets drifted under the influence of electric field applied across the conductor. What is drift velocity? Drift velocity is the average velocity. क्या निकाल रखा है? एवरेज है ये. So drift velocity is the average velocity with which free electron in a conductor just gets drifted under the influence of applied electric field across the conductor, and it is noted by Vd. Clear? So इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा यहाँ से. तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? Vd is equal to what is the value of V1 from this equation? U1 plus A tau 1 plus V2 U2 plus A tau 2 plus U3 plus A tau 3 plus so on Un plus A tau n upon n. This is the value of V1, V2, V3 so on Vn upon n. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास? velocity Vd is equal to U1 plus U2 plus U3 plus Un upon n plus A tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau n upon n. Clear? Next question is U1 plus U2 plus U3 so on U1 upon
n plus a tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau 1 by n, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आता है u1 plus u2 u3 un upon n, ये आपके पास क्या थी 0, इसकी वैल्यू 0 थी। तो वी आर लेफ्ट विद, अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास क्या रहेगा बेटा यहाँ से VD इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये क्या रहेगा मेरे पास A एंड दिस इज द tau, और tau आपके पास यहाँ पे क्या है tau, यहाँ तो आपके पास tau 1 plus tau 2 plus tau 3 so on tau n on n, this is equal to tau, this is the relaxation time, this is known as the relaxation average relaxation time, क्या बन गया ये average relaxation time, so tau is equal to tau 1 plus tau 2 tau 3 so n tau n on, and this is the where tau represents the average relaxation time, क्या है ये average relaxation time, so we are left with Vd is equal to acceleration into average relaxation time, तो यहाँ से Vd is equal to a tau, बट a की वैल्यू क्या थी आपके पास a, ये हमारे पास था माइनस ee by m into tau, जो a की वैल्यू हमारे पास थी, जो a की वैल्यू हमारे पास थी वो क्या थी माइनस ee by m into tau, ठीक है, ये वैल्यू उठा के हम पुट कर दें, Vd की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी यहाँ से माइनस e into e by m into tau, this is the required formula for the drift velocity. So what is the drift velocity? Drift velocity is the average velocity with which a free electron in a conductor just gets drifted under the influence of applied electric field. It is noted by Vd and this is the required formula for the drift velocity. तो बेटा इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा रिव्यू ले रहे हैं, हमने क्या स्टडी किया, सबसे पहले हमने स्टडी किया कि हमारे पास एक कंडक्टर्स है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं, और उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या है 0 है। फिर हमने कंडक्टर लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी E is equal to V by L, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ने क्या फोर्स एक्सपीरियंस की F is equal to minus E into E, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके हमने वहां से एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की, क्या वैल्यू है हमारे पास एक्सेलेरेशन की माइनस E by M, क्लियर है। फिर हमने कहा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी कंपोनेंट इन एडिशन टू थर्मल वेलोसिटी एंड द शॉर्ट टाइम फॉर विच द फ्री इलेक्ट्रॉन अंडरगोज short time for which the free electron accelerate before it undergoes the collision with the positive ion, that was the relaxation time, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया tau से। फिर हमने v1 की वैल्यू लिखी, फिर v2 की वैल्यू लिखी, फिर उसका हमने क्या निकाल लिया एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने की हमने एवरेज निकाल ली, और हमारे पास जो बेटा रिक्वायर्ड था क्या हमारे पास ये आ गया। So what is the drift velocity? Drift velocity is the velocity with which the free electron inside a conductor just gets drifted under the influence of applied electric field across the conductor. So students, I hope ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा। Okay students, thank you, have a nice day.